the beginning, first gonad, female gonad, ovaries. Ovaries are producing 4 hormones: estrogen, progesterone, relaxin, and inhibin. So estrogen is responsible for developing the follicles, Graafian follicle. It helps in developing the Graafian follicle and secondary sexual characteristics. 2 point. Progesterone कौन सेक्रेट करता है? कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है, और वो क्या करता है? थिकन करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग. यूट्रस, दिस इज़ द यूट्रस. ओके, यूट्रस का जो अंदर की लाइन है इसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम. तो इस एंडोमेट्रियम को थिक करता है ताकि इम्प्लांटेशन में ईजी हो जाए. इम्प्लांटेशन इज फिक्सिंग द zygote in the body. That's implantation. And also it stops the inhibit the uterus contraction. Contraction से बचाता है. Then third is relaxin, जो कि corpus luteum बनाता है. और ये किस लिए होता है? लिगामेंट, पेल्विक गर्डल का जो लिगामेंट है उसको रिलैक्स करता है ताकि easy चाइल्ड बर्थ हो. And the last is inhibin. That inhibin is secreted again by corpus luteum, जो कि रोकता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन को बनने से. देन वी हैव द मेल gonads, that's testis. So which hormone is secreted by the testis? It is the testosterone. What is the function of testosterone? And actually it's androgen only. Androgen का example है testosterone. So if any question comes who produces androgen, so don't get confused. Androgen is produced by the testis, and the very common androgen is the testosterone. So where exactly, which part of the body? Inside the testis there is Leydig cells. Those Leydig cells, I'll take you to that page. Here you have seminal vesicle. Okay, and this is also seminal vesicle, this is also seminal, this is also seminal vesicle. In between this seminal vesicle you have these small cells. You call these cells Leydig cells. What do you call them? Leydig cells. So Leydig cells, what is it doing? It is present inside the testis and it's producing luteinizing hormone LH. If there is increase in testosterone, it will control the luteinizing hormone secretion. And what is the main function of testosterone? It is to develop secondary sexual characteristics such as facial, you can just underline here, facial hair, pubic hair, deepening of voice, broadening of shoulders, male aggressiveness. This helps in maintenance of the, also helps, second point, helps in maintenance of the testis because sperms are being produced in the testis. So remember, this is the important function of the second gonad we have studied, that's a male gonad. Now we will understand the next endocrine gland. This gland we use the word diffuse. Diffuse word इसलिए use किया है, you can see the heading, diffuse endocrine gland. Diffuse इसलिए क्योंकि वो एक साथ नहीं है, they are scattered. Cells are scattered type and they are present for different function, और वो completely क्या बोलते हैं, temporary होते हैं. They are not permanent, they are there for some period of time. So one very important diffuse endocrine gland is the placenta. जब एक newborn, or we can say when a new child is growing inside the mother's womb, उसको nourish करने के लिए, उसको nourishment देने के लिए a substance, or we call it as discoid structure, is formed. That's the placenta. So that brings connection between uterine wall, mother की body का और the developing child के बीच का connection होता है placenta. It's a temporary endocrine gland. What it will be doing? It will secrete hormones important for the pregnancy, जैसे कि estrogen, progesterone, HCG, ये सारी चीज़ें secrete करेगा और nourish भी करेगा child के
न्यूट्रिशन को भी, चाइल्ड को जितनी भी न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट होगी फ्रॉम द मदर सेल, इट विल take and give it to the child. Even it helps in throwing out the waste from the child's body. Okay, so it helps in maintaining the pregnancy. So you don't forget this important line, please underline this part in the textbook. Then in our gastrointestinal region, मतलब हमारे digestive tract में, gastrointestinal tract में कौन कौन से डिफ्यूज एंडोक्राइन ग्लैंड्स है. नंबर 1 गैस्ट्रिन, इसको हम बोलते हैं जी सेल्स बोलते हैं. गैस्ट्रिन ये क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं डाइजेशन के लिए, जो हेल्प करता है. सेक्रीटिन ये पैंक्रियाटिक जूसेस और बाइल जूस को बनाने में मदद करता है. देन CCK कॉलसिस्टोकाइनिन. ओके, दिस स्टिमुलेट्स द पैंक्रियास को हार्मोन रिलीज करने में मदद करता है. एंड ऑल्सो स्टिमुलेट्स द गॉल ब्लैडर टू रिलीज बाइल जूस. एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट इन द गैस्ट्रिक रीजन, हमारे एंडोक्राइन और वी कैन से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट है, दैट्स एंट्रोगैस्ट्रोन, जो कि रोकता है. जैसे खाना डाइजेस्ट हो जाता है, वी हैव टू स्टॉप द गैस्ट्रिक जूसेस, नो, सो दैट इज़ इनहिबिटेड, मतलब स्टॉप्स द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस. और भी अगर खाना ख़त्म होने के बाद फिर गैस्ट्रिक जूसेस बनेंगे, देन इट इज़ गोइंग टू स्पॉइल द सेल्स इनसाइड द बॉडी. सो टू स्टॉप दैट, GIP, that is gastric inhibitory peptide, has been formed. Next endocrine gland is kidney. Now you will be saying kidney कैसा एक gland हो गया? Yes, it's an important gland. Why? Because it is producing renin, erythropoietin and calcitrol. In 11th standard we have studied why kidneys, अगर आपकी किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, so doctor will not quickly tell you that you go for डायलिसिस. क्यों हम बोलते हैं डायलिसिस? दिस वी हैव लर्न, डायलिसिस इज़ नॉट द कंप्लीट क्योर. कंप्लीट क्योर इसलिए नहीं है क्योंकि किडनी को सिर्फ क्लीन करना नहीं है किडनी का फंक्शन. इट्स नॉट जस्ट गोइंग टू क्लीन द सिस्टम, बट इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू प्रोड्यूस रेनिन, इराइथ्रोपोइटिन एंड कैल्सिट्रॉल. इनके मेन फंक्शन क्या है? रेनिन क्या करता है? हमारी बॉडी का BP मेंटेन करता है. इराइथ्रोपोइटिन क्या करता है? हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स बनाते हैं. एंड कैल्सिट्रॉल, इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग आ बोन स्ट्रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट ग्लैंड इज द हार्ट. Heart is working as a gland because it is producing ANF, atrial natriuretic hormone. Now, what's the use of this hormone? This balances your body's blood pressure. Whatever आपने बहुत ज़्यादा नमक खाया, सो जब स्ट्रेचिंग हो जाता है एट्रिया रीजन, हार्ट का जो ऊपर का चैम्बर होता है वो खींचने लग जाता है, तब एट्रियल नाट्रियूरेटिक हार्मोन रिलीज होता है एंड इट बैलेंसेस द सोडियम एक्सक्रीशन. तो ये कमांड देता है ब्रेन को कि अब किडनी को बोलो सोडियम को बाहर फेंके. एक्सेस ऑफ सोडियम इज deposited inside the body, so then kidney will throw out through urine excess of the sodium. So it's balancing your blood pressure. Next is the hormone therapy. When our body is not producing any hormone, पूरे चैप्टर में हम लोगों ने बोला कि अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन बना रहे हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस लाइफ में ऐसे हो जाते हैं जब कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स नहीं बनते, तब हार्मोन थेरेपी होता है. जो भी हार्मोन्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इट इज़ टेकन फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम द शॉप इट इज़ ब्रॉट एंड इट इज़ इंजेक्टेड. फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट, अगर आपका बीटा सेल्स पेंसिलिन का काम नहीं कर रहा, सो यू नीड हार्मोन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन. Just like that, we have different hormone therapy for different problems, like during pregnancy, अगर FSH और LH का
secretion. अगर किसी को pregnancy नहीं हो रही, like if somebody is not able to get pregnant, so that person has got problem with the FSH and LH production. तो उनको डॉक्टर्स FSH और LH के हॉर्मोन्स के इंजेक्शन देते हैं ताकि उनकी ग्राफिन फॉलिकल डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाए, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रॉपरली डेवलप हो जाए. दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स. हाँ, देन मीनोपॉज में देर इज़ अ नीड ऑफ calcium increase level. For that, certain hormones are being injected. Then during osteoporosis, we need certain hormones like calcitriol to be injected. Even erythropoietin has been injected for those people who are suffering from some kidney disorders, so that उनकी body में RBC का production proper हो सके और they can easily live their life, right? So these are different condition जो कि hormone therapy उनको help कर सकते हैं. So that comes to an end of this chapter.